post, तो सब कंफ्यूजन रहेगा इंस्टाग्राम के कि आप किस चीज के एक्सपर्ट हो. लेट्स से 1 साल हो गया या 6 महीने में आपने डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर को आपने 50-70 टाइम्स यूज किया है. सो ऑब्वियसली यू हैव मेड अ होल्ड ऑन इट, दैट पर्टिकुलर कीवर्ड. That's why we are making this hashtag bag for us. And also for the businesses out there, if you're an IELTS trainer or you own an agency or you own a company, then the keywords that define your business, you should be using them very often so that you build an identity. The thing is, yeah, don't add any hashtag in your bio. Stories reply, it can be through when someone is interacting with the polls in your story or quizzes in your story or stickers जो रहते हैं ना एक मीटर होता है. So ये सारे तरीके रहते हैं जिसके थ्रू anyone can interact with your profile and that will boost your engagement. If your engagement rate of your profile is of 2 to 10%, then only Instagram give you better reach. मतलब कि if you have 100 followers, then at least 7 to 10 people should engage with your profile on a daily basis. Then your engagement rate is good. And then only Instagram think that you are capable of handling your existing followers. Then only it gives you the opportunity to make you visible in front of the new follower. जैसे हम बचपन में कोई भी चीज के जिद करते थे to our parents, like we want this, तो उनका same होता था, like score this much in your exam and we will give you a buy. Try to understand how much you are capable to handle your existing audience. If your engagement rate is crossing 10%, 20%, 30%, जैसे जैसे आपका engagement rate बढ़ता है, वैसे वैसे आपका Instagram का reach बढ़ता है. ठीक है? So they both grow together. If your engagement rate is good, then your reach will automatically be up. Okay. So it means अगर आप रोज पोस्ट भी कर रहे हो Instagram पे, बट एक ही तरीका है उसके थ्रू, तो लोग जैसे मान के चलो if Shubhashi decided to post a reel today, so that's only one way through which someone can interact with her. But if we post multiple stories in a day, then we are giving multiple chance to our followers to interact with us. तो आप भला ही पोस्ट मत करो, बट स्टोरी डाल के ही आप अपना एंगेजमेंट रेट बढ़ा सकते हैं प्रोफाइल का. सो स्टोरी इज अ वेरी मेजर story play a very big role in boosting the engagement of your profile, because you cannot post five reel or 5 posts a day, but you can share 5 stories in a day with some polls, Q&As, stickers through which people can interact or reply to your story. So I'll share with you some story ideas. I'll share with you some hacks for the story that you should follow. It will also help you boost your engagement rate plus generate leads. Take a second. There's a first tip that I would like to share with you. Before I'm talking about the story ideas for you to post on your profile or for your client, before that, we are discussing some Instagram story tips. So first thing is post in every quarter. Please unmute yourself. Is my screen not sharing? Ma'am, just one doubt I had. When we work for stories देखती हूँ. ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं जिन्होंने अभी स्टोरी शेयर किया. Maybe there are a lot of people, but they are ranking behind because these are accounts I have least interacted with recently. ठीक है? So obviously it works on your favoritism कि आप किनकी स्टोरी या पोस्ट को ज्यादा इंटरैक्ट करते हो. And then also it depends on the recency. Let's say if I'm looking to her post. So she has shared her latest story around 15 hours ago. Okay. She posted 18 hours ago. She posted this. It's not visible to me. Five hours ago. Okay. So it works on your story sequence in your profile will work on the recency and also on the most interactive profile. Okay. So अब एक चीज imagine करो. Imagine that if Shivani
um, know that I have to post at least 5 stories a day. Okay. So she is busy, and she what she did is in the morning around 11 a.m. she posted all these 5 stories one by one, one by one. Okay. Let's say I was online that time, so I was lucky enough to saw her story. But what if one day your followers, or not all your followers will be active that time? So ho sakta hai those followers will see your story, your or maybe open the Instagram around 2 p.m., around 7 p.m. in the evening. So those people who are those followers who are going to open the Instagram after 4 to 7 or 10, 15 hours of your story that you have shared, then they will miss the chance to see your story. So don't post all your story at once. The better option is split your story in multiple quarters. Let's say if right before 2 hours I posted a story. Okay. अगेन मैं 2 बजे फिर से स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ, फिर मैंने 4 बजे पोस्ट किया, फिर मैंने 6 बजे पोस्ट किया, देन आई पोस्टेड अराउंड 7 p.m. So what is happening? Again and again, after every 2 hours, I am coming into the front section of the story row. It means you are taking again and again chance to come in front of the row. क्योंकि आपकी अभी रिसेंटली फिर से रील आपने पोस्ट किया, तो हम स्टोरी के रो में पहले में बने रहेंगे. इसका मतलब है हम अटेंशन फैच करते रहेंगे लोगों का दिन भर. Okay, so those who are not active when the moment then when you share this story, even if you split your story in multiple quarters, so those who have opened the Instagram around 7 p.m. and recently you shared your story around 6 p.m., so they'll be able to see your story from the morning. जब मैं कोई ऐसा अकाउंट देख रही हूँ, मान के चलो मैं इनको ओपन कर रही हूँ, so or if I'm opening जना, सो ऐसा नहीं है कि मुझे रिसेंट स्टोरी दिखा रही, उन्होंने 16 आवर से पूरी मुझे यहाँ पे स्टोरी दिखाएगा उस बंदी की. ठीक है. सो ये चीज है कि पोस्ट योर स्टोरी इन मल्टीपल क्वार्टर्स, इन मल्टीपल intervals rather than posting all at once. Okay, this is first thing that we have to remember. Second tip is, एक second. The second tip is we have already covered this before, that even if you're not posting a specific day, and when you're not posting any reel or post, आप ऐसा कुछ content post नहीं कर रहे हो, even if you share a story, okay, then also your engagement will be consistent. Okay, now I would like to share with you the game of consistency, what exactly it means and why it is important. So it doesn't matter that you posted 50 content this month, कि आपने एक दिन 5 कंटेंट पोस्ट कर दिया, दूसरे दिन 3 कंटेंट और 2-3 दिन बिल्कुल ब्लैंक हो. क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम सिग्नल्स आर ट्राइंग टू आल्सो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ योर एंगेजमेंट. Okay, if on a daily basis your engagement rate is balanced, or activity has happened in your account from your followers, then your engagement rate is balanced and also it is growing. Okay, so let's say if you are feeling very overwhelmed and you are busy because of XYZ thing and you are not getting time to post any reel or make any feed or carousel post, then also those days if you keep yourself active on stories and you give people um, some options to interact with your profile, like reply or like or polls, Q&As, ऐसा भी कर दिए तो हमारा engagement उस दिन का manage हो जाएगा, consistency maintain रह पाएगी. So it's not only important for boosting your engagement, but also balance your engagement rate of your profile those specific days when you're not posting any reel or carousel post. ठीक है, उस दिन हमको स्टोरी पे एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. एंड third thing that you should take care of when it's the story is stickers matters a lot. Okay, here's the secret.
What are the stickers I'm talking about? एक सेकंड फिर से ज्वाइन करती हूँ. स्टिकर्स मतलब ये जो हमको पोल्स Q&As मिलते हैं ना, जैसे आज भी मैंने अगर एक स्टोरी डाला है, देखो जैसे ये पोल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये पोल हो गया. फिर आई हैव यूज्ड अ स्टिकर जहाँ पे ये हैंड्स दिख रहा है, ठीक है, इस पे टैप कर सकता है कोई. और दिस इज अ स्लाइडर वन, ठीक है, ये एक स्टिकर हो गया. सो जस्ट लाइक पीपल कॉमेंट or like your post and your engagement is getting increased, same thing, your one like or your one comment is equals to one interaction in your sticker. Equally important होता है. जैसे आपको एक लाइक मिला, वैसे अगर किसी ने इस पे टैप किया इन स्पेसिफिक स्टिकर्स पे, सपोज इफ आई एम पोस्टिंग ABC whatever it is, और ये यहाँ पे स्टिकर्स आ रहे हैं, जैसे कि एक ये वाला स्टिकर होता है, देन वी हैव पोल्स, क्विज, ये स्लाइडर वाला है ना, जिसमें हम स्लाइडर वाला है, या यू कैन यूज एनी क्विज, क्विज हो गया, देन वी हैव पोल्स, क्विज, दिस पर्टिकुलर स्टिकर एंड स्लाइडर वाला. ये कुछ 4-5 ऐसे स्टिकर्स हैं जिनमें टैप करके वही एंगेजमेंट आपको उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट मिलता है जिस तरीके से आपको पोस्ट में लाइक या कमेंट मिलता है. ओके, सो मैम that's why I shared you that, yeah, yes, please. स्लाइडर वाला कौन सा बता रहे हो आप? ये ओके 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 गॉट इट, थैंक यू. मैसेज करते हैं ना लोग, ये इस तरीके से स्लाइड करेंगे, वही वाला, ठीक है. तो ये कुछ स्टिकर्स होंगे, फिर से मैं बता दे रही हूँ. एक तो ये स्टिकर है जिसमें स्माइली हार्ट वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, वैसे हम उसमें उसको चेंज भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूज इट लाइक दिस, और एनी रिएक्शन यू वांट पीपल टू टैप ऑन इट, यू कैन, जैसे कि ये इस टाइप का, ठीक है, यू कैन चेंज दैट. देन वी हैव पोल्स. पोल्स में हम लोगों को ऑप्शन दे सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर इन द कमिंग पोस्ट. आई टॉक अबाउट व्हाट यू शुड बी यूजिंग इन दैट. फिर क्विज, यू कैन आस्क पीपल टू सिलेक्ट द राइट आंसर. देन द स्लाइडर वाला हो गया. तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज लोग कर सकते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग, बट आई टेल यू अ सीक्रेट हैक हियर. इफ the first story of your day, so my today's first story is this, ये मेरी पहली story आज की. If the first story of your day is having a sticker and those people who interacted with that sticker, the possibility that they will see your next story is very high, and the possibility that Instagram think that you are involving a lot with that particular account. जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे किनकी स्टोरी दिखती है, ऐसे लोग जिनकी प्रोफाइल पे आप बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हो, रिसेंटली इंटरैक्ट किए हो, या उनकी स्टोरी देखते रहते हो. सो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी स्टोरी देखें और यू वांट दोस पीपल टू सी द कंप्लीट स्टोरी दैट यू शेयर एंटायर डे, तो आप अपनी फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे में स्टिकर यूज करो. उसके थ्रू those people who engage with that particular story, Instagram think that these are those accounts who are highly interested in this profile. So even if they open the Instagram after 15 hours, 17 hours, then also your story will be posted. It will be popped up to them in the first few position of the row. ठीक है. जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे कई लोगों की 16 आवर पहले की स्टोरी थी, तो भी मुझे दिखा रही है क्योंकि मैं उनकी प्रोफाइल से रिसेंटली एंगेज करी, उनके स्टोरी से एंगेज किया, उनके स्टिकर्स पे टैप किया. तो इससे आपका स्टोरी लॉन्गर रन तक लोगों को प्रायोरिटी पे दिखाएगा इंस्टाग्राम. Okay, so first story of your day must have a sticker. Now you will be having this concern कि भाई मैं क्या डाल सकती हूँ इस स्पीकर में. So anything like as I have shared my day plan and ready for the day, और शायद मैंने कल भी कुछ ऐसे ही डाला था, are you ready for the week, or
लेट्स मेक इट हैपन एंड यूज एनी स्टिकर। जैसे कि अगर ये पॉसिबल नहीं है ऐसा स्लाइडर डालना, तो जस्ट वो एक जो छोटा सा स्टिकर आना, आई यू रेडी फॉर द डे एंड शेक हैंड्स वाला, वो हम डाल सकते हैं। सो यूज अ स्टिकर इन द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे। ओके, दिस इज वन मोर टिप। Yes, Vibhuti, you have question? Ram. Your story will be story or reel always being visible in the mute automatically. वो म्यूट में ही दिखती है लोगों को। तो अगर किसी को सुनना है तो वो टैप कर लेगा वॉल्यूम बटन पे, फिर उसको सुनाई देना चालू कर देगा। सो लेट्स से सम वन ऑफ योर फॉलोअर्स इज इन द ऑफिस एंड यूजुअली योर followers will be small business owners, so they are in corporate lifestyle, so they won't be watching reels publicly in the, you know, sound on. So when, especially in those reel when you're talking, so also your auto subtitles. Okay, use auto subtitles so that those who are watching in mute, they can also follow along, or just give the title to your story, what you're talking about, so anyone will get the context. Okay, so I'll tell you how to use this auto caption and everything. What are the tools through which you can generate these auto caption if it is Instagram reel or story. Okay, that I'll tell you. Yes, Natulal? You are in mute. या आपकी आवाज नहीं आ रही वो। नो यू आई कांट हियर इट। अनप्लग करके देखो उसको, शायद आ जाएगा। मैम मीनवाइल कैन आई आस्क समथिंग? हाँ बोलो। मैम ये सब तो पब्लिक अकाउंट्स के लिए है। अगर सपोज sometimes if somebody wants to keep their account private only, in that case ऑर्गेनिकली हम ये सारी चीजें कर सकते हैं? जब आपका अकाउंट प्राइवेट है तो स्टोरी भी आपकी मतलब एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को दिखेगी। ऑर्गेनिकली रीच आपकी नहीं बढ़ेगी क्योंकि प्राइवेट अकाउंट को कभी एक्सप्लोर फीड पे या रेंडमली प्रोफाइल उनकी शो नहीं होगी किसी को। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आपका क्रिएटर या बिजनेस पे तो रहना चाहिए अकाउंट। ओके। हाँ ओके। आवाज नहीं आ रही, एक काम करो आप चैट बॉक्स पे डाल दो आपका क्वेश्चन। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमको व्हेन यू आर स्पेशली स्पीकिंग और गिविंग अ ट्यूटोरियल दैट आई हैव आल्सो डन यस्टरडे, तो मैं साथ में ये देखो यहाँ पे मेरा कैप्शन भी चलते जा रहा है। ठीक है, तो ये कैप्शन मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही बनाया है। आई विल टेल यू हाउ डिड आई डू दैट। बेसिकली आपकी जो भी स्टोरी रहती है मैं बता ही देती हूँ उस चीज को कैसे करना है। एक सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली मैंने वो पर्टिकुलर जो भी स्टोरी थी उसको आई हैव क्रिएटेड इट फ्रॉम माय रील। मैं कहाँ पे गई, आई वेंट ऑन रील एंड आई फिल्म्ड इट डायरेक्टली फ्रॉम माय कैमरा। ठीक है, तो अभी मेरे पास वो बनी हुई है। तो यू जस्ट गो ऑन द रील एंड यू टैप ऑन इट, नेक्स्ट पे जाओ, देन यू आर सीइंग ऑन द टॉप बार आपको एक ऐसे स्माइली का आइकॉन दिख रहा होगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन। इफ आई टैप ऑन दैट, यहाँ पे कैप्शंस आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। कैप्शंस पे गए, ऑटोमेटिकली आपका कैप्शन जनरेट कर देता है। ठीक है, फिर उसको सेव कर लो उस रील को और फिर एज ए स्टोरी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर टूल्स वेयर वी कैन ऐड द सबटाइटल दैट आई विल टेल यू इन द रील सेक्शन कि कब हम, जब आपको फैंसी सबटाइटल्स यूज करने हैं, देन वी हैव अदर एप्लीकेशन फॉर दैट, बट राइट नाउ इसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यस शिवानी, माय क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली उसके सबटाइटल ऐसे आपको दिख जाएंगे जब वो बन जाएगा। ठीक है,
तो when you tap, आप उसी सबटाइटल के ऊपर टैप करो तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा. ओके, whenever there section that section is, वहां पे जाके उसको एडिट कर दिया आपने और डन पे क्लिक कर दिया. Okay. So the title on that line we have to just touch. Then we can edit from there. No? Okay. Fine. Thank you. Before I give you this particular hack, I would like to share with you how I create my story theme. Okay, theme of the day. So it always work on the theme of the day. I'll give you two options and you guys tell me which one you feel is looking more resonating or more in the sync. Option A is randomly, let's say if I'm a freelance digital marketer, I shared my day plan. Then I talked about the new Instagram feature. Then in the evening, I shared about the content marketing tactic. And around 7 p.m., I'm promoting SEO. This is A series. So option B is what I did. I first of all understood what is the post I'm going to share today. What is the topic of my reel? What is the topic of my reel? Okay, uska topic kya hai? Second, I'm trying to understand what I'm going to promote today. मुझे आज क्या promote करना है तो इस approach पे मैं जाती हूँ कि let's say I tell you today. As today I want to promote my Instagram Facebook marketing course. Okay, and my today's topic is also on Instagram reel. Okay, now I have shared my first of all day plan where I'm talking about what my daily tasks are. And उसमें task में मेरा है कि I'm going to teach reel marketing today or working for a client on XYZ content strategy और जो भी चीज़ है, ठीक है, इसमें reel की बात आई. Then around 2 p.m. after this session, I'll share a behind the scene of today's live session and I will share some ideas on faceless reel ideas. Let's say, okay. Then around 4 p.m. what I'll do is I will talk on something like suppose if recently I have received a DM or a comment where people are asking about, Prachi, we are not so comfortable on camera and I really want to make reel. Can you share some tips? तो मैंने उसी के tips बताए. फिर around 6-7 p.m. पे मैंने आज की reel डाला जिसमें I shared my story how I started feeling confident and some reel making tips for the beginners. And at the end, I promoted my Instagram marketing course where reel marketing is covered. So if you are someone who is having a creative brain, ये मैं आपके अपनी story आज की बता रही हूँ actually जो मेरा रहेगा, ठीक है? So this is how I planned it out. Let me also show you this. तो ये मेरा आज का story था. Good morning और ये मेरा day plan. उसके बाद था live session day 4. आज अपना है reel marketing के बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे आज. फिर if you want to post a reel and don't want to show your face, then here are some faceless reel ideas. Then I will share a story with some behind the scene on. I know somewhere you also want to show up on camera, but somehow when we see other creator, we start comparing our